We're moving to the state of Maharashtra now, and it's a super Saturday where we will see a lot of rallies. The Shera rallies today just ahead of the state elections. Now, it will be Eknath Shinde on one side and Uddhav Thackeray on the other side, both of them all set for a face-off in the state of Maharashtra. This time, they'll be looking at each other and making sure that they get as many supporters as possible. Both of them are all set for their respective Dussehra rallies. Now, if we speak about the Sena, which is the Uddhav Thackeray faction, they'll be holding their annual Dussehra rally at Mumbai Shivaji Park. On the other side, Eknath Shinde's Shiv Sena rally will be held at the Azad Maidan. Now, this year's rallies are very special. They are very significant. Both the factions are aiming to mobilize as many supporters as possible. The state of Maharashtra will go in for elections next month. Now, as a small teaser, it was Uddhav Thackre's Shiv Sena which urged people to uphold the loyalty and the traditions of the state of Maharashtra. They challenged the opponents to demonstrate what the real Shiv Sena stands for in the upcoming elections. Now, on the other side, it is Eknath Shinde's faction which emphasized that the legacy of Hindutva ideology, which was championed by the late Shiv Sena Supremo Balasaheb Thackeray and all the other leaders, they are the ones who are now upholding all those traditions. It will be a massive face-off. Uddhav Thackeray on one side and Eknath Shinde on the other. उनकी जो बातें हैं, उनके घर में संस्कार जो हुए उन पे वो बताते हैं. किसी को गद्दारी करके पीठ में खोपच देना, ये सारी उन पे जो संस्कार हुए उनके घर में वो दिख रहा है. और यही बात मैं कहना चाहता हूँ, वो तो थर्ड रेट कॉपी जैसे ही बर्ताव है. ओरिजिनल वो ओरिजिनल होता है. दूसरी चीज है, इतनी अगर हिम्मत हो तो वंदनीय हिंदू सम्राट बालासाहेब ठाकरे का फोटो इस्तेमाल ना करे, शिवसेना नाम ना इस्तेमाल करे, धनुष्यबाण ना इस्तेमाल करे, खुद का चेहरा लीजिए और जाइए जनता में. यही है कि महाराष्ट्र का सबसे भ्रष्ट चेहरा कौन है, तो इलीगल सीएम एकनाथ शिंदे. ये डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, स्वतंत्र है, हम लोग सब, तो सभी को अपना विचार रखने का अधिकार हमारे संविधान ने दिया है. लेकिन अगर आप दशहरा रैली यानी मेड़ावा की बात करें तो इस देश में 50 साल से भी ज्यादा समय बीत चुका है कि हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे जी की दशहरा रैली हमेशा ऐतिहासिक रही. नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मेड़ावा भी दशहरा में होता है सुबह के समय, वो हमें मालूम है. अब डुप्लीकेट शिवसेना के नाम पर कुछ लोग यहाँ मेड़ावा करते हैं, डुप्लीकेट. अब उनके ऊपर क्या भरोसा रखेंगे लोग. महाराष्ट्र में आपका क्या काम है? आपका पार्टी का जन्म गुजरात में हुआ है और आपकी पार्टी गुजरात से कंट्रोल होती है. ये मेलावा न भूतो न भविष्यति होने वाला है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री साहब जिस तरीके से काम कर रहे, पूरी महायुति सरकार जिस तरीके से काम कर रहे, लोग खुश है, सब बहनें खुश है. तो मुझे लगता है कि ये खुशी, ये आशीर्वाद देने के लिए जरूर यहाँ पे महाराष्ट्र से शिवसैनिक आएंगे. बाला साहब ठाकरे जी ये हमारे पिता समान है. हमने हमेशा बाला साहब ठाकरे को एक भगवान का दर्जा दिया है और भगवान किसी का मोहताज नहीं होता है, भगवान सभी का होता है. बाला साहब ठाकरे महापुरुष है और ऐसा महापुरुषों को हिस्सों में बांटना नहीं चाहिए. तो मुझे लगता है इनके पास खाली नाम है, हमारे पास उनके विचार है और वो विचार लेके ही हम आगे जा रहे हैं. और यही शिवसेना है जो हिंदुत्व का और बाला साहब ठाकरे का विचार लेके आगे जा रहे हैं. मोहन भागवत जी यही चाहते हैं, हिंदुओं को भावनाओं के साथ खेलना, हिंदुओं को उचकाना और आपस में हिंदू और मुस्लिम को लड़ाना और वोट पाना. और उसमें जो मरेगा तो वो तो कोई बड़े नेता का लड़का नहीं मरता है, वो तो फॉरेन में पढ़ते हैं. हिंदुओं के नेता फॉरेन में पढ़ते हैं, सबके नेता पढ़ते हैं, बहुत सारे लोगों के पढ़ते हैं, चाहे कोई पार्टी के हो. प्राइम मिनिस्टर से लेकर तो गली से लेकर दिल्ली तक तुम्हारे हाथ में. तो क्या हिंदू दुर्बल है क्या? तुम हिंदू को क्यों दुर्बल बताते हो? My colleague Mustafa Sheikh is now joining me on the story live from Azad Maidan, where Eknath Shinde will now be holding his rally. Mustafa, when we speak about the Dussehra rallies, you know, it's the one image which is etched in everyone's mind. It is Bala Saheb addressing lakhs of supporters. Now, the place where you are standing, from that place, from what we are understanding, it will be Eknath Shinde who will say that his party and they are the ones who are now making sure that they carry forward the legacy of Bala Saheb Thackeray.
Well, yes, Aishwarya, Balasaheb Thackeray remains a central figure in Maharashtra's politics. If I show you the stage which has been prepared by the Shiv Sena Eknath Shinde faction, you will get to see a big poster in the center of this entire stage of Balasaheb Thackeray. And Eknath Shinde himself has, it's a small picture of him on the right-hand side, but mainly it's Balasaheb Thackeray. So, be it Uddhav Thackeray or Raj Thackeray from Maharashtra Navnirbman Sena or Eknath Shinde from the Shiv Sena. So, these are three parties which are actually fighting for the legacy and for the thoughts of Balasaheb Thackeray. Now, what interestingly remains is that this is the first, will be the first state election after the two factions of Shiv Sena were divided. So, who gets the mandate from people, whether it is Uddhav Thackeray or Eknath Shinde, is something which will be decisive for both these parties and futures. For last 3 years in Maharashtra, in Mumbai, we are getting to see that both Shiv Sena factions are holding Dussehra rally. This is about, they are saying that they are claiming that there are 80,000 capacity ground which we are showing you at this point, and it will be soon filled with people who are coming from different parts of Maharashtra. There are many political gatherings happening today in Maharashtra, in Bid, Marathwada and Mumbai. There are two. So clearly you can say that these people are fighting the central ideology of Balasaheb Thackeray. Eknath Shinde is saying that Uddhav Thackeray might have name, but he has earned it after working for people. So whose mandate does the people, does the party, Shiv Sena faction get? Whether it will be Eknath Shinde who gets the mandate of the people or Uddhav Thackeray is something which will be interesting to see. And also what speeches Uddhav Thackeray and Eknath Shinde give from different stages will also be agenda setting for the upcoming elections in Maharashtra state election. Back to you. Thank you, Mustafa, for giving us those details. My colleague Mustafa, who's at the Azad Maidan, showing us how a huge poster of Balasaheb Thackeray at the moment has been put up.